പ്രവേശിക്കാം. हम लोग अभी नवा जेरूसलेम का सेकंड विषय में हम लोग क्लास में प्रवेश कर रहे हैं. നമ്മളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇപ്പോൾ ന്യൂ ജെറുസലേം എന്നുള്ളത് നമ്മള് 1000 ആണ്ട് വാഴ്ചയിലെ ന്യൂ ജെറുസലേം ആണ്. അവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് വരാൻ പോകുന്ന സ്വർഗീയ യെരുസലേമിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. तो अभी हमारे विषय में देखा जाए तो जो नवा यरूशलेम का जो बात है वो 1000 साल के बाद जब नवा यरूशलेम का जब जो युग शुरू होगा उस नवा यरूशलेम के युग में रहेगा हमको ज्यादा और स्पष्ट से वो यरूशलेम का वो देश और नगर कैसा है करके वो युग में और भी बातें मालूम पड़ेगा. പുതിയ യെരുസലേമിനെ കുറിച്ച് വളരെ പരിമിതമായ അറിവ് നമുക്ക് വചനത്തിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഉള്ളൂ. इस कारण हमें नया यरूशलेम के नगर के विषय में जो जानकारी है वचन में जितना है उतना ही है, उसी में हम लोग सीमित है. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മള് പഠിച്ചത് പുതിയ യെരുസലേം അല്ലെങ്കിൽ 1000 ആണ്ട് സഹസ്രാബ്ദ വാഴ്ചയിലെ പുതിയ യെരുസലേമിനെ കുറിച്ചാണ്. तो हमने गया हफ्ता हमने जो पार्ट 1 में हमने जब पढ़ा हमने नवा यरूशलेम के नगर के बारे में हम देख रहे थे जो 1000 वर्ष के राज्य में कैसा होगा उसके बारे में हमने देखा था. അപ്പോൾ അത് വളരെ ലിറ്ററലായ ഒരു സിറ്റി ആണെന്നും വളരെ ടൗൺ പ്ലാനോട് കൂടെ കർത്താവ് 1000 ആണ്ട് വാഴ്ച നടത്തുന്ന കാലഘട്ടത്തിലെ ഭരണരീതിയും ജനങ്ങളുടെ വാസവും രാജ്യത്തിന്റെ സുഭിക്ഷതയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അല്പമായി ചിന്തിച്ചത്. और हमने देखा था कि किस रीति से वो नगर जो है सचमुच का एक नगर रहेगा जो 1000 साल का रहेगा और उस नगर की बातें क्या क्या रहने वाला है करके ये सब बातें हमने गया लास्ट टाइम देखे थे. ഇന്ന് നമ്മൾ അതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം ഈ 1000 ആണ്ട് വാഴ്ചയിലെ പുതിയ യെരുസലേമിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ സ്വർഗീയ യെരുസലേമിലും കാണുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഒന്ന് ക്ലബ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു. परंतु आज हम जो विषय हम देखेंगे 1000 वर्ष के राज्य के विषय में जो यरूशलेम का जो नगर है वही बात को हम एक स्वर्गीय यरूशलेम का नगर करके भी हम बाइबल में पढ़ते हैं. ये दोनों बातों में बहुत से बातें समानताएं हैं. ये दोनों बातों का समानता को आज वचन के आधार पर हम देखेंगे. നമുക്ക് 1000 വർഷത്തെ ജെറുസലേമിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ എസ്കേൽ പ്രവചനം അതിന്റെ 48ന്റെ 35 വാക്യത്തിൽ യഹോവ നമ്മോട് കൂടെ എന്ന അർത്ഥമുള്ള യഹോവ ശമ്മ എന്ന പേർ വിളിക്കപ്പെടും എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. ആ വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാം. हम लोग एजेकियल का पुस्तक 48 का 35 हाँ सॉरी 48 का 35 जब पढ़ते समय में वहां पर यहोवा परमेश्वर हमारे साथ है, यहोवा शम्मा करके एक नगर है करके इस तरह का वाक्य को हम पढ़ते हैं. യഹോവ ശമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഹോവ നമ്മോട് കൂടെ എന്ന അർത്ഥമാണ്. तो यहोवा शम्मा मतलब यहोवा हमारे साथ है. ഇതേ കാര്യം തന്നെ അപ്പൊ ഇതൊരു ലിറ്ററൽ ആയിട്ടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ജനത്തിന് അനുഭവിക്കുകയും ദൈവം കൂടെ വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് 1000 ആണ്ട് വാഴ്ചയിലുള്ളത്. കർത്താവ് ജനത്തോട് കൂടെ. तो यहाँ पर 1000 वर्ष का राज्य का खासियत क्या होगा कि प्रभु सचमुच उतर कर आकर प्रभु के लोगों के साथ उनके बीच में रहेगा. प्रभु मतलब वो स्वाभाविक रीति से शारीरिक रीति से लोग प्रभु को देख पाएंगे. इस रीति का अनुभव होने वाला एक रहेगा जिसके वजह से उस युग को कहा गया है कि यहोवा हमारे साथ या यहोवा शम्मा. അപ്പൊ ഇതേ നിലയിൽ നമുക്ക് പുതിയ യെരുസലേമിനോടുള്ള ബന്ധത്തിലും ഇതേ രീതി ആവർത്തിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുന്നു. हम लोग नवा यरूशलेम के विषय में बोलते समय में भी प्रभु इसको आगे भी इस तरह बोलता है करके हम पढ़ते हैं. അവിടെ 22-ാം അധ്യായം रेवलेशन का पुस्तक 22वां अध्याय അതിന്റെ 3-ാം വാക്യം 3-ഉം 4-ഉം വാക്യം 22 का 3 और 4 में जब हम पढ़ते हैं 22 का 3 और 4 पढ़ेंगे. और फिर श्राप ना होगा और परमेश्वर मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे और उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा. അപ്പൊ തന്നെയല്ല ഇനി 21-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 3-ാം വാക്യം കൂടെ വായിക്കാം. और उसका 21 का 3 भी उसके साथ अगर हम पढ़ेंगे तो 21 का 3 भी पढ़ना. फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना कि देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे. അപ്പോൾ 1000 ആണ്ട് വാഴ്ചയിൽ യഹോവ ശമ്മ എന്ന് പറയുന്ന അതേ അർത്ഥത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ കൂടാരം മനുഷ്യനോട് കൂടെ ഇത് പുതിയ യെരുസലേമിന്റെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ
വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 21 അധ്യായത്തിൽ വായിച്ചത്. यस यस, और हमने एजेकियल का पुस्तक 48 में जैसा 1000 वर्ष के युग में, साल में, जब यहोवा परमेश्वर नीचे उतरकर यहोवा शम्मा बोलकर उनके बीच में रहेगा और डेरा बनाएगा, उसी अर्थ में जब नवा यरूशलेम का युग शुरू होगा, नवा यरूशलेम नगर का युग शुरू हो जाने के बाद, यानी कि 1000 वर्ष के बाद, उसके बाद भी देखो वो कैसा बोल रहा है, नगर नीचे उतरने के बाद उसका खासियत क्या होगा कि प्रभु उन लोगों के बीच में डेरा बनाकर मनुष्य के साथ रहेगा. ഇനിയും നമ്മളെല്ലാം വിസ്തരമായി പഠിക്കുന്നില്ല, വളരെ ബ്രീഫായിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത്. और हम लोग सब विस्तार से नहीं जा रहे, बस ऊपर ऊपर से हम पढ़ रहे हैं. ഇനി വേറൊരു കാര്യം നമ്മള് എസ്കേൽ പ്രവചനം 48:8 വായിക്കുന്നുണ്ട്. एजेकियल 48 का 8 में हम एक बात पढ़ते हैं. കാരണം യെരുശലേമിന്റെ നടുക്ക് ദേവാലയമില്ല, യെരുശലേമിന്റെ പുറത്താണ് ദേവാലയം എന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കണ്ടു. हमने गया बार हमने देखा था कि यरूशलेम जो नगर है, यरूशलेम जो मंदिर है, वो मंदिर के नगर के बीच में नहीं है वो मंदिर, बल्कि नगर के बाहर है. അതിന്റെ 48:8 വാക്യത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് വിശുദ്ധ മന്ദിരം അതിന്റെ നടുവിലായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് പലരും ചിന്തിക്കുന്നത് പട്ടണത്തിന്റെ നടുവിൽ എന്നാണ്. എന്നാൽ നമ്മളത് കണ്ടു, പട്ടണത്തിന്റെ നടുവിനെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത്. അത് ലേവി ഗോത്രത്തിന് കൊടുക്കുന്ന ആ പ്രത്യേക സ്ഥലത്താണ്, സിറ്റിക്ക് പുറത്താണ് ദൈവത്തിന്റെ ആലയം. तो यहाँ पर देखो 48 का 8 का आखिरी भाग में लिखा है कि और उसके बीच में पवित्र स्थान हो करके, ये वाक्य पढ़कर लोग अधिकतर बोलते हैं कि नगर के बीच में हमेशा मंदिर होना चाहिए करके ये वाक्य का, परंतु वो वैसा नहीं है. लेवी गोत्र जो है, जो उस समय में याजकों का समाज जो सेवा करता है, उन लोगों का भाग के विषय में है, परंतु मंदिर जो रहेगा वो नगर के बाहर है. 48:16 വാക്യത്തിൽ സിറ്റിയുടെ അളവ് പറയുന്നുണ്ട്. और फिर देखो उसका 48 का 16 जब पढ़ते समय में उस नगर का कितना माप होना चाहिए वो बोला गया है. पढ़ना 16. हाँ. और नगर की यह माप हो, अर्थात उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम और 4,500 हाथ. എന്നാല് ദേവാലയം വരുന്നത് അതിന്റെ 48:8 വാക്യത്തിലാണ്. और परंतु मंदिर कहां पर बोला है, वही 48 का 8 में जब पढ़ते समय में हम देखते हैं. पढ़ना. यहूदा की सिवाने से लगा हुआ पूर्व से पश्चिम तक वह अर्पण किया हुआ बाग हो, जिसे तुम्हें अर्पण करना होगा. वह 25,000 बांस चौड़ा और पूर्व से पश्चिम तक किसी एक गोत्र के भाग्य के तुल्य लंबा हो, और उसके बीच में पवित्र स्थान हो. അപ്പോൾ 1000 ആണ്ട് വാഴ്ചയിൽ മില്ലേനിയൽ കിങ്ഡത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആലയം പട്ടണത്തിന് പുറത്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ പട്ടണത്തിന്റെ അകത്തല്ല. ഇതിന്റെ ഇതേ സിമിലാരിറ്റിയാണ് നമുക്ക് പുതിയ യെരുശലേമിലും കാണാൻ പോകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗീയ യെരുശലേമിലും കാണാൻ പോകുന്നത്. 1000 वर्ष के युग में जैसा प्रभु जब आएगा और इस्राएली राज्य को, उन लोगों का राज्य स्थापना करके जब उनको अधिकार देते समय में, वहां पर जब उनको यरूशलेम नगर बना के देगा, तो उस समय का खासियत क्या होगा, मंदिर जो है नगर के बाहर रहेगा. इसी प्रकार का समानता को हम लोग आत्मिक यरूशलेम के बारे में भी जब पढ़ते समय में, जो प्रकाशित वाक्य में 21वां अध्याय 22वां अध्याय में पढ़ते समय में, वो नगर जो स्वर्ग से उतर आ रहा है, वहां पर भी इस प्रकार के खासियत को हम देखते हैं. ഇനി ന്യൂ ജെറുസലേമിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ, नवा यरूशलेम का युग में जब देखते समय में, സ്വർഗീയ 21 അധ്യായം 21वां अध्याय, അതിൽ 22 വാക്യം, उसका 22वां वाक्य. और मैंने उसमें कोई मंदिर न देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है. ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് സ്വർഗീയ യെരുശലേമിന്റെ പട്ടണത്തിൽ മന്ദിരമില്ല. तो वहां पर शुरुआत में वहां पर क्या पढ़ते हैं कि मैंने वहां पर मंदिर नहीं देखा, यानी कि वो नवा यरूशलेम जो स्वर्ग से उतर कर आया, आत्मिक यरूशलेम या नवा यरूशलेम का युग में, वहां पर मंदिर नहीं देखा करके कहा है. തന്നെയല്ല, സർവശക്തിയുള്ള ദൈവമായ കർത്താവും കുഞ്ഞാടും അതിന് മന്ദിരമാകുന്നു എന്ന് വായിക്കുന്നു. और क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना ही उसका मंदिर है. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് 1000 ആണ്ട് വാഴ്ചയിൽ മന്ദിരം ഉണ്ട്, പക്ഷെങ്കിൽ സിറ്റിക്ക് വെളിയിലാണ്? പുതിയ യെരുശലേമിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗീയ യെരുശലേമിൽ മന്ദിരം തന്നെ ഇല്ല. എന്താണ് ഇതിന്റെ കാരണം? तो हमने जैसा देखा 1000 वर्ष का युग जब शुरू होते समय में, वहां पर मंदिर क्या रहेगा, नगर के बाहर है करके हमने पढ़ा. और नवा यरूशलेम का जो युग है, 1000 वर्ष के बाद जो नवा यरूशलेम का युग आएगा,
उस समय में मंदिर नहीं है करके हमने पढ़ा। इस रीति का अर्थ ऐसा क्यों है? അപ്പോൾ പുതിയ നമ്മൾ 1000 ആണ്ട് വാഴ്ചയില് അവിടെ മരണമുണ്ട്, ജനങ്ങളിൽ പാപമുണ്ട്, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ശാപവിമുക്തമായ അല്ലെങ്കിൽ പാപനിവാരണമായ ഒരു സിറ്റി അല്ല. तो 1000 वर्ष का राज्य में एक बात हमें समझना है, उस समय में 1000 वर्ष का राज्य जब स्थापना करते समय में वहां पर एक खासियत रहेगा कि लोगों के बीच में या लोगों में पाप का अवस्था तभी भी रहेगा। मतलब वो लोग पूर्ण रीति से पवित्रता का अनुभव उनके बीच में तभी भी नहीं रहेगा, पाप का सिलसिला उनके अंदर तभी भी है। ഓക്കെ, എന്നാല് സ്വർഗീയ യെരുശലേമിൽ പാപവുമില്ല, മരണവുമില്ല, അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ആയിരിക്കുന്നു. പഴയ നിയമ 1000 ആണ്ട് വർഷത്തെ അതുകൊണ്ട് വർഷത്തെ ഭരണത്തിൽ പാപവും മരണവും ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതിന്റെ നടുവിൽ നിന്നും ദേവാലയം ഒരു വിശുദ്ധ സ്ഥലത്താണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. तो 1000 वर्ष का राज्य में खास उनका वो अवस्था क्या है कि वो नगर में, क्योंकि उस समय में पाप का दशा तभी भी कार्य होने की वजह से 1000 वर्ष के समय में मृत्यु भी वहां पर लगेगा। लोग जो शारीरिक लोग जो भूमि में जिएंगे उन लोगों को मृत्यु उनके पास होने वाला है, अवस्था होने वाला है। इसके लिए वो अवस्था नगर में, ऐसा अवस्था नगर में होने की वजह से मंदिर उन लोगों के बीच में नहीं होना चाहिए। मंदिर को हमेशा एक पवित्र स्थान में रखा जाएगा जो अलग रहेगा, शहर के बाहर रहेगा वो। परंतु नवा यरूशलेम जो युग है उसका खासियत क्या है? वो नगर का जो 1000 वर्ष के बाद जो नवा यरूशलेम उतर कर आएगा, उस नगर में, उस युग में वहां पर मृत्यु नहीं, पाप नहीं, पूरा पवित्रता का अनुभव वहां पर रहेगा। അപ്പൊ 21:5 നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്, റെവലേഷൻ 21:5. तो उसका 21 का 5 में, प्रकाशित वाक्य 21 का 5 में जब हम पढ़ते समय में, ഇനി മരണം ഉണ്ടാകുകയില്ല, अभी मृत्यु नहीं होगा। हाँ, ദുഃഖവും മുറിവിളിയും കഷ്ടതയും ഇനിയും ഉണ്ടാകുകയില്ല. 4 पढ़ना। और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही. അപ്പൊ ദൈവത്തിന് തന്റെ ജനത്തോട് കൂടെ വസിക്കാൻ തക്ക നിലയിലുള്ള ഒരു വിശുദ്ധിയുടെ ക്രമീകരണം. അതുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ യെരുശലേം അല്ലെങ്കിൽ ഹോളി ജെറുസലേം എന്ന് ന്യൂ ജെറുസലേമിനെ വിളിക്കുന്നത്. तो इसके लिए प्रभु 1000 वर्ष के राज्य हो जाने के बाद नवा यरूशलेम का जो युग रहेगा, उस युग का खासियत यह है कि परमेश्वर वहां पर उनके बीच में डेरा रखेगा और परमेश्वर उन लोगों के साथ रहेगा। और जब परमेश्वर उनके साथ में रहते समय में ऐसा अवस्था होगा कि वहां पर मृत्यु नहीं, वहां पर शोक नहीं, विलाप नहीं, रोने का अवस्था नहीं। इसलिए वो नगर को पवित्र नगर भी करके कहा गया है। ഓക്കെ, ഇത് നമ്മള് ഇത് രണ്ട് തമ്മിലുള്ള സിമിലാരിറ്റികളാണ് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. तो अभी तक हमने जो भी बातें देखा वो समानताओं को देखा, क्या क्या बातें समान है नवा यरूशलेम का 1000 वर्ष में और नवा यरूशलेम का युग में। ഇനിയും ഒരു സിമിലാരിറ്റിയും കൂടെ ഉണ്ട്. അത് നമ്മള്, അതായത് നമുക്ക് അതിന്റെ മില്ലേനിയൽ കിങ്ഡത്തിൽ എസ്കേൽ 47:12 ഒരു ജീവവൃക്ഷത്തെ നമ്മൾ കാണുന്നു. और एक समानता को हम देखते हैं जो कि 1000 साल का युग में और नवा यरूशलेम का युग में, वो है एजेकियल 47 का 12 में जब पढ़ते समय में वहां पर जीवन का वृक्ष के बारे में बोला गया है। വായിക്കാം. 47:12 है। 47:12. 47 का 12 पढ़े। और नदी के दोनों तीरों पर भांति भांति के खाने योग्य फलदायी वृक्ष उपजेंगे, जिनके पत्ते न मुरझाएंगे और उनका फलना भी कभी बंद न होगा, क्योंकि नदी का जल पवित्र स्थान से निकला है। उनमें महीने महीने नए नए फल लगेंगे, उनके फल तो खाने के और पत्ते औषधि के काम आएंगे. അപ്പോൾ 1000 ആണ്ട് വാഴ്ചയിൽ ഇന്നുള്ള ചികിത്സാ രീതി ആയിരിക്കില്ല. तो 1000 वर्ष का राज्य में जैसा आज हम लोग दवाई खाकर जो चंगाई मिलता है उस तरीके का अवस्था नहीं है। പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഡോക്ടർമാരോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും നിലയിൽ ചികിത്സാ വിധിയോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. मतलब आज जो डॉक्टर्स है, हॉस्पिटल है, इस तरह का जो बीमारी लोगों को सेवा करते हैं उस तरह का अवस्था नहीं होगा 1000 वर्ष में युग में। എന്നാൽ രോഗം ഉള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ ചിന്തിക്കാം. കാരണം അത് സാധാരണ രീതിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വളരെ അപൂർവമായ എന്തെങ്കിലും രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇല ചികിത്സയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ രോഗഭേദത്തിന് ഉപകരിക്കുമെന്ന് വായിക്കുന്നത്. परंतु वहां पर हम लोग ये वाक्य के अनुसार हम लोग समझ सकते हैं कि कोई ना तो कोई प्रकार का एक बीमारी वहां पर जातियों के बीच में होगा, रहेगा, जिसके वजह से उसका चंगा मिलने के लिए वो लोग ये वृक्ष का पत्ता खाकर वो लोग चंगा होंगे। ഇത് കർത്താവ് നേരത്തെ യെരമ്യാ പ്രവചനം
അതിന്റെ 33 അധ്യായം 6 ദൈവം ഒരു പ്രവചനമായിട്ട് 1000 വർഷത്തേക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹത്തെ ദൈവം അവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. तो वो पहले से ही जरमाया का पुस्तक 33 अध्याय में प्रभु पहले से ही भविष्यवाणी की रीति से ये बातें उनको बोला गया था. 33 वर्ष 6 उसका वाक्य 6 जब पढ़ते समय में, देख मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों चंगा करूंगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ ജനത്തിന് സമ്പൂർണമായ ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ്, ശാപമില്ല എങ്കിൽ തന്നെയും ഏത് തരത്തിലുള്ള രോഗമാണ് അവിടെ ഉള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ അറിയത്തില്ല. ഒരുപക്ഷെ അത് എന്താണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു അറിവ് നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ചില്ല. तो देखो वहां पर देखो, देख मैं वचन में क्या कहता है कि 33 का 6 में कि देख मैं इस नगर का इलाज मैं करूंगा और चंगा करूंगा. मतलब उस समय में नगर का अवस्था ऐसा होगा कि प्रभु उन लोगों के बीच में एक इलाज भी करेगा और एक चंगाई का अवस्था भी लोगों को मिलने वाला नगर में होने वाला है. ये 1000 वर्ष के राज्य के विषय में. तो परंतु वो किस प्रकार का बीमारी है, क्या क्या प्रकार का बीमारी वहां पर होगा, उसका वहां पर पूर्ण वर्णन वचन में हमें किया नहीं है, परंतु इलाज और चंगाई का अवस्था वहां पर हो रहा है करके हम देखते हैं. അപ്പോൾ ഇതേ ജീവവൃക്ഷം ചികിത്സയ്ക്കായി ഉതകുന്ന രീതിയിൽ പുതിയ യെരുശലേമിലും വരുന്നുണ്ട്. इसी प्रकार का जो ये वृक्ष का पत्ते खाकर स्वास्थ्य के लिए और इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये जो 1000 वर्ष में होने वाला है, यही स्वभाव को हम लोग प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय में भी नवा यरूशलेम का युग में भी हो रहा है करके हम पढ़ते हैं. നമുക്കത് 22 അധ്യായം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 22ന്റെ 2 വാക്യം വായിക്കാം. उसका 22 का 2 में जब हम पढ़ते समय में ये 1000 वर्ष के बाद नवा यरूशलेम का युग की बात चल रहा है. 22 का 2 पढ़े. और नदी के इस पार और उस पार जीवन का पेड़ था, उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वहां हर महीने फलता था और उस पेड़ के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे. ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സഭയിലുള്ളവർക്ക് രോഗമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ യഹൂദനും രോഗമില്ല, നേഷൻസ് ജാതികൾക്ക് അത് ചികിത്സയ്ക്ക് ഉതകമാകും അല്ലെങ്കിൽ സൗഖ്യത്തിന് ഉതകമാകും എന്ന രീതിയിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. तो यहाँ पर हम जब पढ़ते समय में क्या देखते हैं, नवा यरूशलेम का युग का जो नगर का खासियत है, इसके पहले हमने क्या देखा, 1000 वर्ष का युग में हमने क्या देखा कि इस्राएली लोगों के लिए था वो फल और पत्ते के विषय में. परंतु यहाँ पर जब पढ़ते समय में, नवा यरूशलेम का युग में जब पढ़ते समय में, वहां पर क्या है, मंडली को कोई भी प्रकार का बीमारी नहीं हो क्योंकि उनको महिमादायक शरीर मिलने वाला है. इसराइल के विषय में भी नहीं है, परंतु जाति जाति लोगों के चंगा के विषय के लिए वो पता काम करेगा, इलाज के लिए काम करेगा करके हम पढ़ते हैं. അത് ചില ദൈവദാസന്മാരുടെ അഭിപ്രായം അത് രോഗമല്ല, ഇങ്ങനെ അമിതമായ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ട് ദഹനക്കേട് പോലുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിരിക്കാം. കാരണം അവിടെ ऐसा माना जाता है बहुत सारे प्रभु का दास लोग इस वाक्य को इस तरह का अर्थ बताते हैं कि उस समय में बीमारी नहीं होने वाला, कोई भी प्रकार का रोग नहीं, बुखार ऐसा अवस्था नहीं होगा, परंतु लोग भोजन खाकर, क्योंकि उस समय में भोजन बहुत रहेगा, अति भोजन, ज्यादा भोजन खाने के वजह से उनके पेट में जो एसिडिटी हुआ रहेगा, उसका इलाज के लिए, उसका दुविधा से बाहर निकलने के लिए ये लोग पत्ते खाएंगे. കാരണം 22ന്റെ 3 വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട്, क्योंकि उसका 22 का 3 में जब पढ़ते समय में യാതൊരു ശാപവും ഇനി ഉണ്ടാകില്ല, और फिर श्राप ना होगा. അപ്പൊ പാപത്തിന്റെ നിലയിൽ ഉണ്ടായ രോഗമല്ല ഇവിടെ ഉള്ളത്. यानी कि पाप के वजह से अभी जो युग में, अभी जो हम जीते समय में पाप के वजह से जो बीमारी आया है, उस प्रकार का अवस्था नहीं है नवा यरूशलेम का युग में. അപ്പം 1000 ആണ്ട് വാഴ്ചയിലുള്ള ചികിത്സ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ജീവവൃക്ഷം ഇവിടെയും പുതിയ യെരുശലേമിലും തുടരുന്നുണ്ട്. तो नवा यरूशलेम 1000 वर्ष के राज्य में जो जीवन का वृक्ष का पत्ते का जो इलाज जो 1000 वर्ष में हो रहा था, वही इलाज का सुविधा वो नवा यरूशलेम का युग में भी जाति लोगों का फायदे के लिए है करके, ये 2 समानता और एक समानता को हमने देखा. അത് സിറ്റിയുടെ അകത്തുള്ളവർക്കല്ല എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട്, സിറ്റിയുടെ പുറത്തുള്ള ജാതികൾക്കാണ്. और यहाँ पर हमने प्रकाशित वाक्य 22 का 2 में हमने क्या पढ़ा कि वो जाति जाति लोगों के लिए, मतलब वो नगर के अंदर नहीं रहेगा, यरूशलेम नगर में नहीं, नगर के बाहर रहेगा. അവിടെ അതിന്റെ 21 അധ്യായത്തിന്റെ 23 വാക്യത്തിൽ वो 21 का, हम जब 23 का वाक्य जब पढ़ते समय में, प्रकाशित वाक्य 21 का 23 में, നഗരത്തിൽ പ്രകാശിപ്പാൻ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ആവശ്യമില്ല. 23 पढ़ना.
और उस नगर में सूर्य और चांद के उजाले का प्रयोजन नहीं, क्योंकि परमेश्वर का तेज से उसमें उजाला हो रहा है और അപ്പം मेघना उसका दीपक है. അപ്പം പ്രകൃതിപരമായ അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യനോ ചന്ദ്രനോ ആവശ്യമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ദൈവ തേജസ് കൊണ്ട് നിറയുന്ന യെരുസലേം പട്ടണത്തിന്റെ അകത്തുള്ളവർക്ക് അല്ല ഈ ചികിത്സാവിധി ഉള്ളത്. യെരുസലേം പട്ടണത്തിന് പുറത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ യെരുസലേമിന് പുറത്തുള്ള ജാതികളൊന്നുണ്ട്. ആ ജാതികൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നതെന്നൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ പഴയ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പുതിയ സ്വർഗീയ യെരുസലേമിൽ വരുമ്പോൾ ഈ 1000 ആണ്ട് വാഴ്ചത്തെ യെരുസലേം ഒരു പഴയ യെരുസലേം ആവും. तो अभी तो यहाँ पर देखो, यह नगर के अंदर सूर्य का किरण नहीं, सूर्य का चमक नहीं होगा और चांद का चमक नहीं होगा, बल्कि यहोवा परमेश्वर का ही ज्योति पूरा उस समय का युग में उजाला बनकर चमकेगा. यानी कि मतलब क्या है, जब नवा यरूशलेम का नगर जब उतर कर आते समय में उसका खासियत क्या है, उस समय में जाति लोग भी है, हम जानते हैं और पढ़ते भी है. ये जाति लोग कैसा नवा यरूशलेम का युग में आया, उसका विषय हम लोग आगे के क्लासों में हम देखेंगे. परंतु नगर में पूरा दुनिया भर में परमेश्वर का महिमा रहेगा, जो ज्योति बनकर उजाला बनकर चमकेगा. और ये प्रभु का कार्य. तो इस तरह नवा जो 1000 वर्ष का जो युग है, उस युग से अलग थोड़ा आगे बढ़ के बातें रहेगा नवा यरूशलेम का युग का जो समय. तो 1000 वर्ष के साल में जो प्रभु इस्राएली लोगों के लिए यरूशलेम नगर बांध के जो प्रभु उनको देगा, वो जब नवा यरूशलेम युग शुरू होगा, उस युग में 1000 वर्ष के समय में जो मंदिर बांधा था वो नगर रहेगा, वो क्या कहला जाएगा, पूरा यरूशलेम कहा जाएगा. और युग को नया यरूशलेम कहा गया है. അപ്പോൾ ഈ എസ്കേൽ 47 അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ച നദിയുടെ ഒരു സവിശേഷതയുണ്ട്. वो एजेकिएल का पुस्तक 47 में जो हमने नदी के बारे में हमने पढ़ा था, उसका एक खासियत को हम देखते हैं. ഈ നദിയുടെ ഒരു ആത്മീയ അർത്ഥം പുതിയ നിയമത്തിൽ കർത്താവ് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 7 അധ്യായത്തിൽ പറയുന്ന, തിരുവചനത്തിൽ പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തിരുവചനത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ ജീവജല നദികൾ പുറപ്പെടും എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വാക്യത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്ഥലത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ്. तो एजेकिएल का पुस्तक में 47 में जब नदी के बारे में बोलते समय में उसका एक खास खासियत जो हम लोग मंडली के विषय में, प्रभु जब यूहन्ना का सुसमाचार 7वां अध्याय में प्रभु कहता है कि विश्वास करने वाले के अंदर से जीवन का नदी का धारा या स्रोता बहते रहेगी करके, वो यहाँ पर एजेकिएल में लिखा हुआ वाक्य के आधार पर है प्रभु वहां पर यूहन्ना का सुसमाचार में कहता है. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇന്ന് സഭയിൽ ജീവജലത്തിന്റെ നദി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ചാണ്. तो आज मंडली में जो जीवन का नदी का धारा बह रहा है करके जब प्रभु बोलते समय में वो पवित्र आत्मा के विषय में कहा गया है. അപ്പോൾ പുതിയ യെരുശലേമിലും വരുന്ന വിശ്വാസികളുടെ ഉള്ളിൽ ആത്മീയ അർത്ഥത്തിൽ അന്ന് വരുന്ന വിശ്വാസികൾ, പട്ടണത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്നവർക്ക് ഇന്ന് സഭായുഗത്തിലുള്ളവരിൽ ഈ ആത്മാവിന്റെ ഒരു ജീവജല നദി ഒഴുകുന്നതായ അനുഭവം അവർക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ആത്മാവിൽ ജനിക്കുക എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. तो क्योंकि अभी हम लोग जो विश्वास करने वाले नया जन्म पाए हुए हर एक विश्वासी लोगों के अंदर जीवन का धारा बह रहा है या जीवन का नदी बह रहा है करके बोलते समय में पवित्र आत्मा का कार्य कर रहा है, वो आज जो विश्वासी में हो रहा है उसी तरह का अवस्था को नवा यरूशलेम का युग में भी लोगों के अंदर आत्मा बहने का या नदी बहने का अवस्था उस समय के लोगों के अंदर भी होगा करके हम पढ़ते हैं. जिसका मतलब है उनके अंदर भी एक नया जन्म का एक अवस्था जो आज हमारे अंदर है वो उस समय में होगा. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ആത്മാവിനെ കിട്ടുന്നതിന്റെ ഒരു സിമിലാരിറ്റി കൂടെ നമ്മൾക്ക് എസ്കേൽ പ്രവചനം 47 അധ്യായത്തിലുണ്ട്. तो किस तरह आज हमें आत्मा मिल रहा है और तभी कैसा होगा करके उसका एक समानता भी हम लोग एजेकिएल 47 में हम पढ़ते हैं. അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്, യാഗപീഠത്തിന് തെക്കുവശത്തായി ഈ നദി ഒഴുകുന്നു എന്ന് വായിക്കുന്നു. അതിന്റെ 47 അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഈ നദി അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവിന്റെ പ്രവാഹം നമ്മൾ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ പറയുന്നത് അനുഭവമാകുന്നത് യാഗപീഠത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്നതാണ്. वाक्य था 47 1-2 വാക്യങ്ങൾ. 47 का 1 और 2 में जब पढ़ते समय में वहां पर देखो, वेदी से एक नदी बहकर आता है करके 1 और 2 में वहां पर हम पढ़ेंगे तो हमें वहां पर वो मिलेगा. तो वो वेदी से जो पानी आने का जो अनुभव है वही बात था प्रभु यूहन्ना का सुसमाचार 7वां अध्याय में विश्वास करने वालों के अंदर से नदियां बहेगा करके प्रभु ने कहा. അപ്പൊ യാഗപീഠത്തിന് തെക്കുവശത്തായി ഒഴുകി വെള്ളം ആലയത്തിന്റെ വലത്തുഭാഗത്ത് നിന്ന് കീഴ് നിന്ന് യാഗപീഠത്തിന് തെക്കുവശത്ത്. അപ്പൊ യാഗപീഠത്തിൽ നിന്നാണ്, അപ്പൊ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശുമരണത്തോട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് ആത്മാവിന്റെ നിറവ് ഒരു വിശ്വാസിക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്.
तो यानी कि वेदी की ओर से जो नदी बहकर आ रहा है करके जो एजेकियल 47 में बोलते समय में, उसी तरह नए नियम के विश्वासी लोगों को जब प्रभु का उस कलवरी क्रूश, वेदी जो क्रूश को दिखाता है, उस क्रूश को जो भी विश्वास करेगा, उस क्रूश से एक धारा बहकर विश्वासी का हृदय में बहता है करके वो अनुभव को हम लोग नए नियम के विश्वासियों में हम देखते हैं। നമ്മൾ റോമലേഖനം 8-ാം അധ്യായത്തിന്റെ അതിന്റെ 3-4 വാക്യങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്ത് വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജഡത്തിന് ന്യായവിധി കഴിഞ്ഞു, ഇനി ജഡത്തെ അല്ല ആത്മാവിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ക്രമത്തെയാണ് ഈ എസ്കൽ പ്രവചനം 47-ാം അധ്യായത്തിൽ കാണിക്കുന്നത്. हम लोग रोमियो का पुस्तक 8वां अध्याय 3 और 4 में वाक्य को हम लोग एजेकियल का 47 के साथ तुलना करके हम पढ़ेंगे तो अभी विश्वासी लोग पाप में शरीर के समानता के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार जिए, इस तरह का कार्य प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस में किया है, जो विश्वास करने वालों के अंदर आत्मा का कार्य होगा करके रोमियो का 8 में पढ़ते समय में वही अनुभव है एजेकियल का 47 में 1-2 में वेदी से बहने वाला नदी का कार्य. അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഇനി അധികം സംസാരിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ഇനി പുതിയ യെരുശലേമിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുൻപേ പുതിയ യെരുശലേമിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതും കൂടെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം. तो अभी हम आगे बढ़ते हैं. अभी हम लोग नवे यरूशलेम के विषय की कुछ बातों को हम देखेंगे. അപ്പം 21-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. तो प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय में नवा यरूशलेम का जो युग है वहां पर हम पढ़ते हैं. 21-ന്റെ 1-ാം വാക്യത്തിൽ उसका पहला वाक्य पढ़े. फिर मैंने नई आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് പുതിയ യെരുശലേം എന്ന് പറയുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കെട്ടിടം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആ മന്ദിരം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നതിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവം ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഒരു പുതിയ ആകാശം, പുതിയ ഭൂമി, പുതിയ യെരുശലേം. ഇതാണ് ദൈവത്തിന്റെ ക്രമം. तो हम क्या देखते हैं कि वहां पर नवा यरूशलेम का युग का अवस्थे में वहां पर हम देखते समय में प्रभु जब प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय में वहां पर हम क्या देखते हैं, जब वहां पर वो नगर में वो नवा यरूशलेम का जो नगर है जब वो स्वर्ग से उतर कर आ रहा है, भूमि की ओर उतर कर आते समय में एक अवस्था को हम देखते हैं. उस अवस्था के बारे में था जब अभी हमने प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय में हमने पहला वाक्य में हमने पढ़ा कि एक नया आकाश होगा और एक नया भूमि होगा. तो वो नवा यरूशलेम का जो नगर का खासियत क्या है, वहां पर एक नया आकाश और एक नया भूमि का आरंभ वहां पर होगा जहां पर नया यरूशलेम रहने वाला है. അപ്പൊ അവിടെ ഈ പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും പുതിയ യെരുശലേമും ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ അകത്ത് വസിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചും സഭ ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയാണ്. ഇസ്രായേലിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ അതിന്റെ സിറ്റിയുടെ അകത്ത് വരുന്നവരും പുതിയ നേഷനായിട്ട് പുതിയ യെരുശലേമായിട്ട് തീരുകയാണ്. പിന്നെ യെരുശലേമിന് പുറത്തുള്ളവര് പുതിയ ജാതികളാണ്. ഇതെല്ലാം പുതിയതാണ്. അപ്പം 7 കൂട്ടം കാര്യങ്ങൾ അവിടെ പുതിയതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു. तो इसके लिए ये नगर, ये एक ऐसा युग है, एक ऐसा समय है जहां पर सब नयाकरण का, नया होने की बातों का अवस्था को वहां पर बताता है. अभी उदाहरण के लिए विश्वासियों का जीवन का विषय में प्रभु वचन में क्या कहता है, जो कोई मसीह में है वो एक नया सृष्टि बन चुका है करके हम देखते हैं. तो विश्वासी लोग अभी से ही अभी का नया करार से ही वो लोग एक नयापन का, एक नया सृष्टि का अनुभव में जी रहे. उसके बाद जब नवा यरूशलेम का अवस्था जब होगा वो युग में, वहां पर नया आकाश है, नया भूमि है और 1000 वर्ष के राज्य में जो इस्राएली लोग थे, जो यरूशलेम के नगर के वासी लोग थे, 1000 वर्ष में वो लोग जब नवा यरूशलेम का युग में प्रवेश करेगा, उनका क्या होगा, वो पुराना यरूशलेम नवा यरूशलेम करके नगर का आधार पर जाना जाएगा. और 1000 वर्ष में जो जाति लोग थे, वो जाति लोग जब नवा यरूशलेम का युग में प्रवेश करेंगे, उन लोग का खासियत क्या होगा, उन लोग भी नया प्रकार का जाति कहलाए जाएंगे. इस प्रकार सब तरीके से नयापन का अनुभव है नवा यरूशलेम का युग में. ഓക്കെ. പുതിയ ആകാശം, പുതിയ ഭൂമി, പുതിയ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ സൃഷ്ടിയായ അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ജനിച്ച ദൈവമക്കൾ, പുതുതായിട്ട് സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്ന ഇസ്രായേല്, പുതിയ നേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ യെരുശലേമിന് പുറത്ത്, ഇതെല്ലാം പുതിയതായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വിസ്താരമായ ഒരു ഭരണ സംവിധാനമാണ് കർത്താവ് അവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നത്. तो उस समय का खासियत है वहां पर नया आकाश है, नया पृथ्वी है, नवा यरूशलेम का नगर है जो नया है.
उस नया यरूशलेम के नया इस्राएली लोग है जो नयापन का अनुभव में है, और जाति लोग, उन लोग जब नया यरूशलेम का युग में प्रवेश करेंगे, वो लोग नया जाति करके नयापन का अवस्थे में, वो लोग, उन लोग को भी वो आशीष मिलेगा। ये लोग जाति लोग नगर के बाहर के लोग हैं और इस्राएली लोग नगर के अंदर के लोग हैं, उनके अंदर भी नयापन का इफेक्ट दिखेगा, और विश्वासी लोग भी एक नया सृष्टि के अवस्थे में है। इस प्रकार का नया अवस्थे में रहते समय में एक नयापन का रीति से परमेश्वर का, यीशु मसीह का न्याय और अधिकार वहां पर चलेगा। അപ്പൊ ആകാശം അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ആകാശം ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ ഈ ആകാശ തട്ടുകൾ ഏകദേശം 7 ലെയറുകൾ ഉണ്ട്. അതെല്ലാം മാറ്റി പുതിയതായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പുതിയ ആകാശം സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയതിനെ റിന്യൂ ചെയ്ത് പുതിയതാക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ്. तो वो नया आकाश वहां पर होगा करके बोलते समय में, आज जो हम लोग आकाश देखते हैं उसका मंडलों को किस तरह ऐसा माना जाता है कि 7 प्रकार का स्तर है आकाश में, वो सब बदल दिया जाएगा, वो सब हट जाएगा, वो पुराना हटाकर नया सिरिके का नया रीति का एक आकाश को हम देखेंगे। അതുപോലെ തന്നെ ഭൂമിയും പുതിയതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമിയിൽ ഉള്ള ജീവോത്പാദകളുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും തീയിട്ട് നശിപ്പിച്ച് ഭൂമിയും അതിലെ മൂലപദാർത്ഥങ്ങളും വെന്ത് ഉരുകി ഒരു പുതിയ ഭൂമി ഉണ്ടാകുകയാണ്. और फिर नया पृथ्वी होगा करके मतलब क्या है, 1000 वर्ष का युग जैसे ही खत्म हो जाने के बाद प्रभु ये पृथ्वी को आग से नष्ट कर देगा। आग से नष्ट करने के बाद पृथ्वी का जो भी पदार्थ है, जो भी बातें हैं, वो सब जलकर भस्म होकर खत्म हो जाकर एक नया पृथ्वी का प्रभु निर्माण करेगा। അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നു സമുദ്രം, 21 അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന പുതിയ ഭൂമിയിൽ സമുദ്രമില്ല. और ये नवा यरूशलेम का खासियत क्या है, उस युग में खासियत क्या है, वहां पर समुद्र नहीं है। അപ്പോൾ ഇത് ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് മുൻപേ സമുദ്രമില്ലായിരുന്നു. तो मतलब ये क्या अवस्था को दिखाता है, प्रभु एक समय में जब मनुष्य को बनाने से पहले भी एक जमाना ऐसा था कि समुद्र नहीं था। സ്വർഗവും ഭൂമിയും ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെങ്കിൽ സമുദ്രമില്ലായിരുന്നു. एक ऐसा जमाना भी था जब मनुष्य को बनाने से भी पहले की बात है, उस जमाने में एक ऐसा समय था जहां पर आकाश था और पृथ्वी था, परंतु समुद्र नहीं था। എന്നാൽ മനുഷ്യന്റെ വീഴ്ചയുള്ള ബന്ധത്തിൽ ജലപ്രളയം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാപ് തിയറി, നോഹയുടെ ജലപ്രളയമല്ല, ഭൂമി മുഴുവനും വെള്ളം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു കിടന്നിരുന്നു. ആ വെള്ളം ദൈവം ഒരു സ്ഥലത്ത് ശേഖരിച്ചതാണ് സമുദ്രമായിട്ട് മാറുന്നത്. परंतु हम ये विषय को मानते हैं, परमेश्वर ने आदम का सृष्टि करने से पहले, उसके पहले एक थोड़ा पुराने पहले जमाने का एक सृष्टिया थी जो आदम को बनाने से पहले था। उन जमाने की सृष्टि के लोगों को परमेश्वर ने पानी से बाहर लेकर उस जमाने को परमेश्वर ने न्याय किया था। नोआ का जमाने का बात नहीं कर रहा हूं, नोए का बाढ़ का अवस्था अलग है, परंतु आदम को बनाने से पहले जो उसके पहले पूर्व जीविया जो जी रहे थे, उनको विषय में परमेश्वर ने पानी से न्याय किया था। उस पानी को जब उत्पत्ति का पुस्तक में पहला अध्याय में पढ़ते समय में, उस पानी को प्रभु ने सृष्टि को वापस दोबारा रीएस्टैब्लिश करते समय में उस पानी को थोड़ा अलग करके भूमि को पानी के ऊपर लाया, तो वो पानी जो अलग करके इकट्ठा रखा था उसको समुद्र कहा गया है करके उत्पत्ति का पुस्तक पहला अध्याय में हम पढ़ते हैं। ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ സമുദ്രമില്ലാത്ത ഒരു ലോകത്തെ സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും കഴിയുകയില്ല. കാരണം ആകാശവും ഭൂമിയും തമ്മിലുള്ള നിയമത്തിൽ സമുദ്രത്തിന് വലിയൊരു ഭാഗമുണ്ട്, വലിയൊരു പങ്കുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ സമുദ്രമില്ലാത്ത ഒരു ലോകം ഇന്നത്തെ ശാസ്ത്ര ലോകത്തിന് വിശ്വസിക്കാനേ കഴിയില്ല. अभी के जमाने के लोगों ने, जिन्होंने आकाश देखा है, पृथ्वी देखा है और समुद्र देखा है, ये तीनों हमेशा साथ में चलता। अभी के समय में जैसा आकाश और पृथ्वी ये और समुद्र, ये तीनों ऐसा लिंक्ड है कि तीनों एक दूसरे के साथ संबंधित है। इसलिए आज का शास्त्री लोग और आज के प्रमाणी और आज के बुद्धिमान लोग नवा यरूशलेम में समुद्र नहीं होगा करके बोला तो वो उन लोग का समझ के बाहर है, वो उन लोग समझ पाएंगे। आज का विज्ञान ये बात का अर्थ को समझाकर बताकर दे नहीं पाएगा, क्योंकि उन लोगों ने अभी का जमाने को देखा है। എന്നാൽ 1000 ആണ്ട് വാഴ്ചയിൽ വെള്ളത്തിന്റെ സ്രോതസ് എങ്ങനെയാണ് കർത്താവ് ക്രമീകരിക്കുക നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. അവിടെ ജലമില്ലെന്നല്ല, തടാകങ്ങളില്ലെന്നല്ല. അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്, 22:1 വായിക്കുന്നുണ്ട്, ജീവജല നദി പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നതായിട്ട് വായിക്കുന്നുണ്ട്. परंतु अभी हम लोग
प्रकाशित वाक्य उसी 22 का 1-2-3 में वहां पर पढ़ते समय में वहां पर भी देखो एक वाक्य ऐसा उस समय में समुद्र नहीं है करके बोलते समय में नदी के विषय में वहां पर प्रकाशित वाक्य 22 का 2 में वहां पर हम पढ़ते समय में हम पढ़ते हैं, परंतु वो नदी कहाँ से बह रहा है, उसका शुरुआत क्या है, उसका हम लोग पूर्ण अर्थ को हम लोग नहीं समझते, परंतु ये नदियां वहां पर बह कर आ रहा है, जिसके वजह से वो फल जीवन का वृक्ष का फल उत्पन्न हो रहा है, ये सब बातें वहां पर पदार्थ हो रहा है। तो पानी वहां पर है, नदी बह रहा है, परंतु समुद्र नहीं है। അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മള് ആയിരമാണ്ട് വാഴ്ചയിലെ ദൈവാലയത്തിൽ നിന്ന് ഒഴുകുന്ന നദി ചെന്ന് ചാവുകടലിൽ പതിക്കുന്നു. ചാവുകടലിലുള്ള വസ്തുക്കൾ ജീവികൾ ജീവിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ അത് കാണുന്നുണ്ട്. അത് എവിടെ ചെന്ന് പതിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മളെ പുതിയ യെരുശലേമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആയിരമാണ്ട് വാഴ്ചയിലെ നദി ചെന്ന് പതിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിസ്തീർണമുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ സ്വർഗീയ യെരുശലേമിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു കാര്യം പറയുന്നില്ല. हम लोग जब नवा यरूशलेम 1000 वर्ष का राज्य के विषय में वहां पर एक बात वहां पर कहा गया है, 1000 वर्ष का राज्य जब वहां पर स्थापना होगा, उस 1000 वर्ष का राज्य का स्थापना में जब परमेश्वर जब मंदिर बांधेंगे, उस मंदिर बांधते समय में वहां पर हम क्या देखते हैं, एजेकिएल ने इस विषय का दर्शन देखा है। 1000 वर्ष का राज्य में जब मंदिर बांधा जाएगा, उस मंदिर का अंदर से वेदी से एक नदी बहकर आ रहा है। वो नदी बहकर आकर वचनों में इस तरह लिखा है कि ये नदी का खासियत ऐसा है कि ये जाकर वो मृत्यु सागर, जो आज का मृत्यु सागर है, उसमें जाकर घुल मिल जाएगा करके हम लोग वचनों में हम लोग इस विषय में हम पढ़ते हैं। तो ये 1000 वर्ष के राज्य में होने वाली बातें हैं, जो मंदिर के वेदी से निकला हुआ नदी, उसका शाखा बहकर वो जाकर समुद्र में जाकर घुल मिल जाता है। परंतु 1000 वर्ष का साल हो जाने के बाद जब नवा यरूशलेम का युग शुरू होगा, नवा यरूशलेम के युग में ये नदी जो परमेश्वर की जो बह रहा है, उसका अवस्था क्या है, वो बाइबल में उसका विषय बताया नहीं है। അപ്പോൾ സമുദ്രം കാണില്ല, പക്ഷെങ്കിൽ ജലതടാകങ്ങളില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. तो हमने प्रकाशित वाक्य है उसका 22वां अध्याय 21वां अध्याय का 1 में हमने क्या पढ़ा, समुद्र वहां पर नहीं है करके हमने पढ़ा, परंतु उसका मतलब ये नहीं कि और भी पानी के नदियां वहां पर नहीं होगा, इस तरह का बातें बोला नहीं है, सिर्फ समुद्र के बारे में नहीं है करके कहा है। ഓക്കെ, 22ന്റെ ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം. तो वहां पर 21 उसका 22 का 1 जब पढ़ते समय में वहां पर हम देखते हैं 22 का 1 पढ़ना। फिर उसने मुझे बिनौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की एक नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മള് ഏസ്കൽ പ്രവചനത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് ഈ നദി ഒഴുകുന്നത് ദേവാലയത്തിൽ നിന്നാണ്. हमने एजेकिएल का पुस्तक में हमने क्या पढ़ा था कि ये जो 1000 वर्ष के राज्य में जो मंदिर है, उस मंदिर के वेदी से नदी बहकर आ रहा है, पानी बहकर आ रहा है, परंतु प्रकाशित वाक्य में अभी हमने क्या पढ़ा कि परमेश्वर का सिंहासन से पानी आ रहा है, नदी आ रहा है. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ദൈവം കരുതുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ സിംഹാസനം മനുഷ്യനോട് കൂടെ വെക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സഭ ദൈവത്തെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ട് ദൈവത്തോട് കൂടെ വസിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ദൈവവും അവന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ജനവും ദൈവവും പിതാവും മക്കളും ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സന്ദർഭമാണ് പുതിയ യെരുശലേം അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗീയ യെരുശലേമിന്റെ പ്രതീതി നമുക്ക് ഉളവാക്കുന്നത്. मैन तो ये स्वर्गीय यरूशलेम का खासियत क्या है, मतलब वो क्या बताना चाहता है, 1000 वर्ष के राज्य में मंदिर से बह रहा था, परंतु नवा यरूशलेम का युग का खासियत यह है कि वो और करीब आ रहा है, परमेश्वर हमसे और करीब आ रहा है, मतलब परमेश्वर और मेमने का सिंहासन से पानी बहकर आकर वो पृथ्वी पर वो नदी और उसका शाखाएं बहेंगे. मतलब वो क्या दिखाना चाहता है कि परमेश्वर मनुष्य के बीच में डेरा बनाकर परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा मंडली इस तरह का सभी लोग पृथ्वी पर परमेश्वर की उपस्थिति अनुभव करके सब लोग साथ में रहेंगे, जहां पर परमेश्वर के साथ साथ मंडली भी साथ में वो लोग उल्लास और आनंद करेंगे, और एक पिता और पुत्र उन लोग को जब खुशी और आनंद मिलते समय में उल्लास का जीवन में कैसा खुशी में जीता है, उस तरह का एक पारिवारिक जीवन का एक अनुभव वहां पर होगा, जहां पर परमेश्वर हमारे पिता रहकर उस खुशी और आनंद को हम लोग वहां पर नवा यरूशलेम का युग में जो स्वर्गीय यरूशलेम का अनुभव है उस नगर में उस समय में होने वाला है. അപ്പോൾ ഈ പഴയ നമ്മളെ 1000 ആണ്ട് വർഷത്തെ ജെറുസലേമിൽ അത് അക്ഷരമാണെന്നും ഇനിയും പുതിയ യെരുശലേം സ്വർഗീയ യെരുശലേമിൽ അക്ഷരമായി ഒന്നുമില്ല, അത് തികച്ചും ഒരു സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റിയാണ്, അവിടെ ഈ പറയപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല
എന്ന് ചില പഠിപ്പിക്കലുണ്ട്. परंतु आज दुनिया भर में एक ऐसा शिक्षण भी वहां पर बोला गया है, सिखाते हैं लोग कि जो प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ नया आकाश होगा, नया पृथ्वी होगा, नवा यरूशलेम होगा, ये कुछ शारीरिक रीति नहीं है। 1000 वर्ष का युग भले ही शारीरिक रीति होगा, परंतु प्रकाशित वाक्य में लिखा है वो प्रभु एक छाया का रीति से बोला है, चिन्ह का रीति से बोला है, इसमें सच्ची का पदार्थ कुछ भी नहीं होगा करके ऐसा एक शिक्षण भी लोगों को सिखाया जाता है। അപ്പൊ നമ്മൾ ചില സിമിലാരിറ്റികളെ 1000 ആണ്ട് വാഴ്ചയിൽ നിന്നും പുതിയ യെരുശലേമിൽ കണ്ടത്, അത് 1000 ആണ്ട് വാഴ്ചയിൽ ലിറ്ററൽ ആയിരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പുതിയ യെരുശലേമിൽ ലിറ്ററൽ തന്നെയാണ്. अगर आज जैसा आज हमने देखा, हमने एजेकल का पुस्तक से और प्रकाशित वाक्य का पुस्तक से, एजेकल का पुस्तक में 1000 वर्ष का समय में जो मंदिर होगा, जब नगर होंगे, लोग हैं, वो अगर सचमुच का नगर है, सचमुच का मंदिर है, सचमुच का लोग वहां पर और पेड़ है, वृक्ष है और नदियां बह रही है, ये सब सचमुच का हो रहा है, तो 1000 वर्ष के बाद जब नया आकाश और नया भूमि और नया यरूशलेम उतर कर आएगा, उस समय में भी सचमुच होने वाला है। मतलब सब दोनों युगों में शारीरिक रीति से अनुभव होने वाली बातें हैं, सचमुच ऐसा ही रहेगा। അപ്പൊ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി കരുതിയിരിക്കുന്ന പുതിയ യെരുശലേമിനെ ഓർത്ത് നമുക്ക് നന്ദി പറയാം. इसलिए आओ प्रिय, हम लोग परमेश्वर ने हमारे लिए युगानुयुग के विषय में प्रभु ने जो जो बातें हमारे लिए सोच कर रखा है और प्रभु के साथ हम लोग खुशी और मंगल में हम खुशी से हम जिएंगे, ये सब बातें प्रभु ने हमारे लिए सोच कर रखा हुआ बातों को देखकर प्रभु को आओ हम धन्यवाद करें। നമ്മളൊരു 10 മിനിറ്റ് ഡിസ്കഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാര് നിങ്ങള് നമ്മൾ സംശയങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വിശദീകരണമോ കൂടുതലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാം. मैन अब आगे का समय हम लोग डिस्कशन के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। भाइयों को विषय में, इस विषय में और भी अगर गहराई की बातें जानना है तो हम लोग उसके विषय में सीखेंगे। कि आज का क्लास अभी हम लोग यहीं पर ही समाप्त कर रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आप सब लोगों को इसका आशीष मिला होगा। हम लोग ने 1000 वर्ष का युग का में जो यरूशलेम का नगर का विषय में हमने देखा और वहां पर सचमुच शारीरिक रीति से होने वाले बातों को हम देखा। और 1000 वर्ष के बाद जब नवा यरूशलेम का युग खत्म हो जाने के बाद वहां पर एक यरूशलेम शहर, नवा यरूशलेम स्वर्ग से उतरकर आने वाला एक नगर के विषय में भी हमने देखा जो सचमुच वहां पर उतरकर आ रहा है करके। इस तरह दोनों युगों का विषयों को हमने देखा। इस विषय में आप सबको लाभ हुआ है करके मैं विश्वास करता हूँ। प्रभु आपका महिमा करे। प्रेज द लॉर्ड।